और इसके अलावा विधि विभाग के हमारे प्राध्यापकगण एवं हमारे जो सभी प्रिय छात्र छात्राएं यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी का हम हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। और इस पैनल की अध्यक्षता कर रहे लखनऊ विश्वविद्यालय के फैकल्टी डीन प्रोफेसर बीडी सिंह जी को स्मृति चिन्ह के रूप में विधि विभाग के डॉक्टर देव कुमार ओझा जी आकर के उनका सम्मान करें। आकर मैं अपने विभाग की दोनों सहकर्मी प्राध्यापक हमारी हैं मिस प्रीति जायसवाल और डॉक्टर प्रीति सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आकर के सर को जो है सम्मानित। कि वो डॉक्टर अमनदीप सर लखनऊ राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय लखनऊ से हमारे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनका सम्मान। पैनल के अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर बीडी सिंह सर से निवेदन करूंगा कि वो आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं और इस सत्र को प्रारंभ कर रहे हैं। और उसका परिचय हो ही गया है, तो हम अपने सहयोगियों के साथ आप लोगों का स्वागत करते हैं और अपना आप पेपर प्रेजेंट करें क्रमबद्ध रूप से। स्वर्णिमा वर्मा जी। Good afternoon, respected sir and ma'am and all students. My name is Swarnima Verma. I am from BLLB first semester. Here I am presenting my topic, right to health and well-being of children. So first of all, as we know that the child is the very important part of a society. So what are the main problems a child faces in their stages of development? So we have to understand which includes like when a baby comes in a womb of mother, it has to be prevent malnutrition. A very good afternoon to respected juries, teachers, my dear friends. Today I, Yuvraj Pathak of BLLB first semester, feel very honored to speak on the topic right to health of senior citizens. So now without any further delay, let's first understand what is health. The preamble of the World Health Organization, WHO, which was established on 7 April 1948, defines health as a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. The right to health is recognized in several core international and regional human rights treaties and national constitutions as the International Convention on Economic, Social and Cultural Rights. The Convention on the Rights of Child are some of the central human rights instruments for the protection of right to health. All international, regional and domestic documents of policies and programs of upholding human rights are to be interpreted and constructed in such a way that the right to health can be upheld. In a particular, the human rights of the elderly persons to health can be achieved not only effectively but also resourcefully. In 1982, the General Assembly has organized the first World Assembly on Aging, which created a 62-point BENA International Action Plan on Aging. Good afternoon to panelists and everybody present here. I am Anjali Roy, Trinity College. Through my research paper, I try to make us understand the importance of healthy environment and right to health. I think there is no doubt that humans are the best creation of God, with the most complex system ever. But all the courage, power, strength of a body is just a part of wisdom what a health holds. We the people of India, enriched with numerous rights as a citizen, but willingness to be in a good, pollution-free environment is still a dream to achieve. Now I would like to draw your attention towards my opinion regarding environmental pollution. As we all know, on October 8, 2021, the UN Human Rights Commission adopted resolution 48/13 recognizing a clean, healthy and sustainable environment
is a human right, and more than 150 countries across the world recognize and protect the right to healthy environment through their constitutions, national law, judiciaries, etc. A clean and sustainable environment. Global population is expected to peak around 8 or 9 billion this year, whereas India is the most polluted country in the world. This continuous increase in population also leads to extreme pollution. It is ironic that we humans pollute the air that we breathe in, but our activities for progress in the healthy by living in a polluted environment, there is nothing left. Excellencies, teachers, friends and colleagues, thank you for listening my talk. And to signifies freedom from any deceit or pain. The preamble of the Constitution, which gives a broad direction for the Indian Republic, refers to a social, economic and political justice, and also equality of status and of opportunity under the term social justice. One can be in the question of access to health care facilities and the medical education. The government is under obligation to protect the health of people because there is a close nexus between health and the quality of a person. There are various provisions under the Constitution of India which deals with the health of public. And I would like to conclude my words here. Health is not a privilege. It is a right as fundamental as civil right. It's a right as fundamental as giving every child to get a chance to public education. Thank you. जयसवाल जी कुछ अपने शब्दों अपने विचारों को यहाँ पर रखना चाहती हैं, उनका यहाँ पर स्वागत है मैडम। Thank you so much, Anand sir. Good afternoon and good afternoon all of you. Right to health. हम बात करते हैं हमेशा अधिकार की। ज़्यादातर हमारा ध्यान जाता है हमारी संपत्ति के अधिकार पर, हमारी शिक्षा का अधिकार, हमारे माता पिता से जो मिलने वाला है उस अधिकार की, लेकिन हम इसे भूल जाते हैं जिसकी वजह से हम हैं, वो है हमारा भोजन। अगर हम कुछ खाते नहीं हैं तो क्या हम जी सकते हैं? और जब हम जी नहीं सकते हैं तो हम अपने आप को कहीं भी प्रदर्शित कर ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने भोजन के अधिकार पर ध्यान देना चाहिए। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा पोषण के अधिकार है बच्चे और महिलाएं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये बताया ही नहीं जाता है कि उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या वो खाएं जिसकी वजह से वो सरवाइव कर सके इजीली विदाउट एनी डिसीज। बट कुछ भी खा लो, बस काम कर लो किसी तरीके से, कुछ भी खा लो, ऑफिस पहुंच जाओ। हम उस चीज को मेंटेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर डाइट शेड्यूल। हम अपना डाइट शेड्यूल अगर रेडी करें और उससे भी अच्छा, जैसे हम एड्स देखते हैं ना, हर चीज के कौन सी क्रीम लगाए तो गोरे हो जाएंगे, कौन सा कपड़ा पहने तो वो ब्रांडेड है। इसी तरीके से अगर हमारे सामने ऐसे एड्स आए जिसमें हर मूवमेंट पे हमें ये बताया जाए कितनी जल्दी हम क्या ऐसा भोजन लें जो हमें हेल्थ भी दे, न्यूट्रिशंस भी दे और हमारी हंग्री की फूड नीड्स को भी फुलफिल करे, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। किस तरीके से आवश्यक है भोजन का, किस तरीके से हमको अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए। और जो राइट टू हेल्थ का एक जो टॉपिक ये रखा गया है, ये हर व्यक्ति के जीवन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। अगर हम इसको निगलेक्ट करते हैं तो समाज में बहुत समस्याओं का सामना हमको करना पड़ता है। और कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली WHO का जो भी वर्क हो रहा है, जो भी प्रोटेक्शन मिल रहा है, इसके अलावा हमारी आपकी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां हैं, मोरलिटी है कि हम भी समाज में किस प्रकार से इस जो राइट टू हेल्थ की बात हम लोग कर रहे हैं उसको कैसे मेंटेन किया जाए। और इस प्रकार से जो ये हमारे सेमिनार्स एंड जो वर्कशॉप एंड जो अदर कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इसके माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने के लिए कोशिश की जाती है। और यहाँ पर हमको बहुत भोजन के साथ साथ अपने शारीरिक के लिए बहुत, जैसे कि ये भी बताया गया था कि योग पर बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए।
क्योंकि फिजिकली के लिए हमको इंटरनल कैपेसिटी की भी बहुत ज़रूरत होती है, जो कि हमको योग से प्राप्त होती है। और आयुर्वेदिक में जैसे कि सर ने भी उद्घाटन सत्र में भी बताया था कि वायु, कफ और पित्त का बहुत बड़ा रोल होता है। उसी प्रकार से हमको इन सब चीज़ों को बैलेंस करके चलना है, और जब हमारा शरीर ही स्वस्थ होगा तभी हम आगे की ओर कार्य कर पाएंगे और अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। सर है उनका जो नॉलेज है, जो फ्रूटफुल नॉलेज है, वो हम सबको प्राप्त हो, हमारे विद्यार्थियों को भी प्राप्त हो, हमको भी प्राप्त हो। सर आप सबसे निवेदन है। Respected faculty members, on the dais, dear students, my topic for the interaction which I would be having with all of you would be related to right to health in relation to environment pollution. Right to health vis-a-vis environmental pollution. We can divide this topic into two parts. On one hand, we have right to health. On the other hand, we would be talking about environmental aspects. Let me take it one by one. First, right to health. Right to health, friends, is one of the most cherished right, most cherished. Correct. We all understand that we cannot imagine our existence, we cannot imagine our survival without proper health. And this is the reason why we have so many documents, international, which support this particular right. Whether we talk about UDHR, whether we have international covenant on social, economic and cultural rights, or we have different international instruments dealing with people, dealing with migrant workers, their families, vulnerable groups. Meaning by there is a range of different international instruments which talk about the importance of right to health. Alright. And if we talk about our own country, most of you covered this point that we have a constitutional mandate in this regard. Alright. And though not mentioned explicitly, but the thing is, under Article 21, it has been interpreted that right to life includes right to healthy health. Alright. So we come down to constitutional mandate when environment is again something very important for all of us, and again lots of jurisprudence is there that has developed in the field of environment. Alright. Whether you talk about Stockholm Declaration, whether you talk about Rio Declaration, whether you talk about Agenda 21, whether you talk about Rio Plus 20 Conference, Future We Want, World Charter for Nature, concept of sustainable development, Millennium Development Goals, Sustainable Development Goals. So meaning by we have lots of developments in the field of environment also. It talks about the importance of environment. Alright. So here also we come down to constitutional mandate, and on the other side also where we were talking about right to health, there also we come down to constitutional mandate. And again, one thing again which everyone will suffer, interdependent. We cannot separate them. So we come down to right to healthy environment is something which we come down to. Alright. Now the thing is what we have to understand here is that what is the modern jurisprudence in this regard. If we talk about modern jurisprudence, friends, आप इस चीज पे गौर करिएगा कि जो modern jurisprudence है regarding environment, it starts from industrialization that started during 17th/18th century in Britain. Nothing is in isolation, everything has a reason. Here the reason was that most of the inventions that took place because of which industrialization started, or because of which industrialization became reality, that were British by origin. They were Britishers behind that. So it was but obvious that they would be the first beneficiary. So वहीं पे industries चालू हुई, lathe machines, milling machines, new mechanical processes, वहीं पे शुरुआत होते हैं, and gradually they shifted towards heavy factories, heavy industries. And this industrialization, friends, with the passage of time started posing threat to environment.
जो कि इंग्लैंड के आसपास, लंदन के आसपास बहुत सारे जो मिड टाउन्स थे, दैट हैड बिकम हाईली पोल्यूटेड, लाइक आगरा, लाइक कानपुर, लाइक फिरोजाबाद, like Ludhiana, polluted cities. This was a reality at that point of time. I am talking about 18th century, 19th century. Alright. So this was a reality there also. So the thing was, law, आपने एक चीज गौर की होगी, law is reactive in nature. In reaction to something, laws are framed. So in reaction to this, बहुत सारा publication आया. जब भी कोई इतना बड़ा disturbance होता है, there are publications for that. उन पब्लिकेशंस को कंसिडर करते हुए लेजिस्लेशन आर फ्रेम्ड फॉर पब्लिक हेल्थ, फॉर लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, हाउ दे विल बी डीलिंग विद दिस हेल्थ इश्यूज, ठीक है। और बाद में अगर मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस को देखें तो फिर 1945 में यूएनओ का आना और बाद में हिरोशिमा नागासाकी अटैक ने भी इस तरीके के जो 2 अटैक्स हुए, ठीक है, इन द ईयर 1945, दीज टू ऑल्सो प्रॉम्प्टेड डिस्कशन ऑन कि देयर मस्ट बी एथिकल लिमिट ओवर ह्यूमन कंडक्ट, क्योंकि अगर ह्यूमन बींग्स को हम फ्री छोड़ देंगे तो अगेन दैट कैन बी डिजास्टर्स फॉर फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। आप सब जानते हैं हिरोशिमा नागासाकी अटैक्स की वजह से कितना डिस्टर्बेंस आया और आज तक उसके जो इम्पैक्ट है ऑन द हेल्थ स्टिल इट कैन बी फेल्ट। सो इस तरीके से मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस आता है और बाद में स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के रूप में, रियो डिक्लेरेशन के रूप में वी केम डाउन टू कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड अगेन आपने जो गौर की होगी, देयर आर लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स लाइक precautionary principle, polluter pay principle, ठीक है, all these doctrines came into picture. And here let me tell you that even Indian judiciary was also very supportive. And again because of PIL, because of judicial activism, बहुत सारा इसका emphasis मिला, even उषा टंडन मैम भी इस बात पे फोकस कर रही थी. And again we came down to we came down to the current principles which are there. पर स्टिल आप इसके बावजूद भी इतना सारा इंटरनेशनल डेवलपमेंट हुआ, इतना सारा नेशनल डेवलपमेंट हुआ, इतना सारा जुडिशियल पुश मिला इस चीज को, इवन सिविल सोसाइटी ग्रुप्स आल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इवन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस आल्सो प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट व्हाट इज अ रियलिटी? द ग्रिम सिचुएशन टुडे इज, द ग्रिम पोजीशन टुडे इज दैट मोर देन 50% ऑफ आवर रिवर्स आर हाईली पोल्यूटेड. Alright, most important cities of our country are air polluted. Alright. After 1986, after this we came down to comprehensive legislation dealing with Environment Protection Act. बहुत सारे rules बनाए हैं hazardous substances को deal करते हुए, biomedical. So ground level water has also become polluted. ठीक है, और ज़्यादा बड़ी बात नहीं करना, I'm also basic I'm from Kanpur. Jajgaon का मैं आपको बताऊं, one of my friend covered the situation in Jajgaon. Sir, you would be astonished to know कि यहाँ पर जो during monsoon ये जो Jajgaon वाला एरिया सर वो टेनरीज वाला बेल्ट है वहाँ पर सर, और टेनरीज में जो वर्कर्स काम करते हैं ना सर, मैंने खुद सर उस चीज को देखा है सर। पेट में कीड़ा होना एक अलग चीज होती है, पेट से डॉक्टर जब वो चेक कर रहा है ऐसे स्किन के अंदर से कीड़े निकल रहे हैं। Can you imagine the level of contamination? और अगेन द रीजन इज कि कई जो कि बहुत सारे छोटी टेनरीज भी हैं, बहुत छोटे सेटअप्स भी हैं, और केवल टेनरीज भी नहीं और भी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर केमिकल रिलेटेड। द इशू इज कि एमसी मतलब ये उसी एरिया को ही सर डील करता है। बट मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ सर कि वहाँ पे जो ये वाली जो चीज है, जो कीड़े वाली जो चीज है सर, दिस इज समथिंग वेरी नॉर्मल। एंड अगेन द वाटर ऑफ द होल रीजन इज नॉट फिट, और रिवर्स ड्रिल करके सर वो पूरा का पूरा जो स्लज होता है वो उसके अंदर ही डाल देते हैं, so the thing becomes very difficult. So we have these rules, we have these judicial precedents, we have judgments, we have orders, we have principles, we have concept of sustainable development. But again, जब हम लोग अपने आसपास चीजों को देखते हैं, अभी पोजीशन सर अभी कुछ क्या कहते हैं, कुछ कंट्रोल हुई है सर, कुछ कंट्रोल क्या हुई है, उन्होंने ऑपरेशन ही बंद कर दिए हैं। तो ऑपरेशन जब बंद हो गए तो फिर वो सिचुएशन थोड़ा सा ठीक हो गया। गवर्नमेंट टू इनिशिएटिव, बट अभी भी मैंने ये सुना है कि ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, ड्यूरिंग जो रिलीजियस प्रोसेशंस होते हैं तब तो वो लोग बंद कर देते हैं, देन इट बिकम्स फाइन। बट अगेन एक वंस दे स्टार्ट देयर ऑपरेशन, अगेन थिंग्स सिचुएशन बिकम्स वर्स। लेदर प्रोडक्शन actually main the thing is the issue is that the issue here is that
it's not that we should not allow them. The thing is that they should operate, alright, they have the right to do business, but again there is a right way of doing business. There is a right way of dealing with your sludge which you are emitting out. So again, this was something which they were not taking seriously. But again, now things are improving. But still the situation is, what I want to say is that still the situation, in spite of so much jurisprudence, modern jurisprudence, in spite of so many modern principles, the concept of sustainable development is wide enough. इसका scope इतना wide है कि it can include everything. हम लोग environmental पढ़ाते हैं law, और मेरी शुरुआत भी environmental law यही से हुई, उपाध्याय सर हम लोग को पढ़ाते थे environmental law यहाँ पर। तो जब धीरे धीरे पढ़ाते हुए चीजें और समझ आती हैं, जब आदमी पढ़ाने लगता है, तो पढ़ाते पढ़ाते सर ये समझ आया कि अगर environmental law का अगर सार है ना, gist of environmental law or environmental jurisprudence is the concept of sustainable development. It is that wide. But the situation is entirely different, and especially the situation in our country is very difficult, very disturbing, when more than 50% of our rivers and air pollution, noise pollution is like, the situation becomes hell. You just pass by any bus stand or railway station, again situation is very serious. ठीक है, और जो डेसिबल जो लेवल जो है, again the level which has to be maintained, no one takes care of that. Pressure horns are there, and I don't know why PIL has not been filed against pressure horns. There are many such issues. ठीक है, we can have बहुत लंबी discussion इस चीज को हो सकती है. Now the thing is कि again कोई भी interaction तब तक सार्थक नहीं होता जब तक हम उसकी solution की बात न करें, और solution के बारे सर मैं ध्यान नहीं देते. ठीक है, पुरुषार्थ की बात करते हैं, पुरुषार्थ के बारे में सबने सुना होगा, धर्म काम अर्थ काम मोक्ष. ठीक है, more मतलब these are some, like you can say, the highest human goals according to the Vedic tradition we have. ठीक है, and health is considered to be the fountainhead to attain these four most important human goals. Health, alright. So अगर हम कुछ भी ना करें, हम केवल इन्हीं चीजों में फोकस करें, ठीक है, हम इन्हीं चीजों में फोकस करें और केवल अगेन द थिंग इज कि केवल राइट पे नहीं, यहाँ पर मुझे लगता है कि मोर देन आर्टिकल 21, मोर देन व्हाट इज इम्प्लिसिट अंडर आर्टिकल 21, वी शुड बी मोर कंसर्न्ड अबाउट आर्टिकल 51 AG, which talks about our own duty, what we are doing in with respect to environment. I think that is more important. And until and unless each of us will not come up in this regard, each of us will not understand our responsibility towards environment, I don't think anything can change. Because again, let me tell you, with regard to environment, जितना environment law मैंने समझा है, every important thing, every important treaty, every important deliberation has already taken place. Now the thing is, we have to implement that. कुछ भी नहीं बचा, there is no vacuum. Everything has been taken care of, everything is there in the books. ठीक है, और हम लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम मॉडर्न बुक्स को छोड़ के केवल अगर हम एंशिएंट स्क्रिप्चर्स भी अगर हम पढ़ लेंगे ना, एंशिएंट विजडम भी अगर हम पढ़ लेंगे, तो अगेन थिंग्स कैन गो इन द राइट डायरेक्शन. ठीक है, तो लास्ट में मैं केवल अपने हमारी गुरुबाणी में एक चीज है, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत. तो अगेन मतलब जहाँ पर पानी को मतलब इतना इम्पोर्टेंस दिया है, एयर को इतना इम्पोर्टेंस दिया है, डे एंड नाइट आर जस्ट like nurses in whose laps the world is residing. So again, we have to be cautious enough and we have to come forward. All right, so that's it from my side. और आप लोगों का भी इंटरेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, और खासकर अंजलि रॉय बेटा आपका मुझे वॉइस डिलीवरी बहुत अच्छी लगी. हाँ जी. Optimistic approach of which situation बेटा? Optimistic approach is this beta, that we need to be first of all the thing is the situation is difficult, situation is disturbing, alright, and that in spite of having so much development at international level and in modern times, we can be optimistic. And the issue here is why we have to be optimistic, because we have rich tradition beta, we have rich ancient scriptures to guide us. So if
our values are guided by the ancient values, if our daily codes are guided by the ancient wisdom we have, again, I can assure you, situation would be quite normal. Again, which we all expect. Right? Any other thing? Say instead of optimistic, if we go to reality, then is there a chance? Because in my opinion, I don't think so. There is a chance because the ancient methods are degrading day by day. Why are you saying that they are degrading? Because you are not concerned. You are not taking them into consideration. That is another issue. But how can we say that they are degrading? So because of the modernization, westernization. So, who is saying that in modern times we cannot take guidance from the ancient scriptures? Who is stopping you? Because let me take example of Scandinavian countries better. What we do is, in the name of modernization, we take their different aspects. We follow them. We ape them. And the correct word is we ape them. Okay? We want to follow their modern way of life. But what importance they give to their nature, what importance they give to their environment, they go for science, their standards are different. अच्छा मानते हैं यहाँ पर अगर आप साइकिल में चलेंगे, वॉक करेंगे, आपका बड़ी गाड़ी नहीं होगी, तो आपको कोई भी अच्छे से बात नहीं करेगा. तो वैल्यू सिस्टम को चेंज करना होगा बेटा. इंस्टीट्यूशन चेंज तो हमने बहुत अच्छे से कर लिया, बिहेवियरल चेंज भी तो जरूरी है ना बेटा. हम जब एलपीजी की तरफ बढ़े, लिबरलाइजेशन, हमने प्राइवेटाइजेशन की तरफ गए, ग्लोबलाइजेशन की तरफ गए, ठीक है, तो हम लोगों ने इंस्टीट्यूशन चेंजेस तो कर लिए बेटा. हर चीज बढ़िया हो गई. पहले बैंक ऑफ बड़ौदा एसबीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग टाइप का था, ठीक है. मॉडर्न बैंक हमें बड़ा अच्छा लगा, वहाँ पे जाना चालू कर दिए. टोटली धीरे धीरे सब चीजें एयर कंडीशन हो गई. अब एयर कंडीशन का बेटा आप अगेन वी कैन फील द इम्पैक्ट. ग्रीन बिल्डिंग्स होती है, अगर ग्रीन बिल्डिंग्स की तरफ जाते हैं तो वहाँ बहुत अच्छा होता है बेटा. जब धीरे धीरे जब जितने भी कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब अपने आप को जब एक्सपेंड कर रहे थे, वहाँ पे ग्रीन बिल्डिंग्स होती और अच्छे से बहुत थी. अब जापान का मैं एग्जांपल हूँ. जापान में आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई आपके सामने बैठा भी है ना ट्रेन में, अगर उसका कोई फोन आ जाता है इंपॉर्टेंट, तो वो साइलेंट कर देगा, उसको मैसेज करता है, ठीक है. दिस इज द इम्पोर्टेंस व्हिच दे गिव टू नॉइज पोल्यूशन. बहुत छोटी सी बात है सर, बहुत छोटी सी बात है ट्रेन में. और आप यहाँ पे देख लीजिए, ट्रेन में कोई आपको इंप्रेशन जमाने के लिए आपसे बहुत तेजी से बात करेगा आपके सामने. तो नॉइज का आप खुद समझ लीजिए कि कितना नॉइज को कभी मैंने इंपॉर्टेंस नहीं दिया. सर हमारे थे वो एक इंटरेक्शन हुआ था, उसमें वो बता रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट इज अगेन वेरी क्लीन एंड ग्रीन. वहाँ डेसिबल साउंड अगेन आप समझ सकते हैं, आपके हाथ में होती है. तो सिचुएशन वाज डिफरेंट. ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. तो सर आपने जो फ्रूटफुल्स जो हम लोगों को नॉलेज दिया है, और बहुत ही प्रैक्टिकल जो चीज़ें आपने बताई हैं, जैसे कानपुर की ट्रेनरीज का जो इशू उठाया आपने, और जगह जगह पर आपने जैसे एक चीज़ बताया कि हम इन्वायरमेंट को और हेल्थ को कैसे इंटरलिंक करेंगे. जब तक हम इन सब चीज़ों को नहीं समझेंगे तो जो हमारा एक इस सेमिनार का या अन्य जो हमारा जो इसका एक मोटिव है, वो उसको हम पूर्ण कर पाने में असफल रहेंगे. तो इस तरीके से सर ने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई कि हमको मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस के अलावा जो फोकस करना है वो एंसेंट जूरिस्प्रूडेंस पर भी हमको फोकस करना है. और हम लोग जब छोटे थे तो, और अभी भी देखते हैं, जो जिस प्रकार से एंशियंट की तरफ हम वापस आ रहे हैं, जिस प्रकार से एक समय था कि बाइसिकल से लोग चलते थे. और सर की इस बात को मैं पूर्ण तरीके से एक्सेप्ट करता हूं कि आज जो सोसाइटल जो स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग इस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में योगदान दे रहे हैं. थैंक यू सर. इसके अलावा सर मैं सर से निवेदन करूंगा कि आगे की प्रक्रिया को सर कंटिन्यू करें. Very good afternoon, respected chair, my co-panelists, and dear students, and the faculty members. We have a short of time, and the teacher itself means a habit. It's better to say that we speak more and more. So I don't want to do that today. The certain things which I like to share with you, as from the inauguration session you people were here. 2-3 things which I like to put forward you, that what is my apprehension
and that may be in the other way, it's my suggestion. But the suggestions sometimes it may be that we are reach to the act, but even it will not work. In that respect, I would like to put certain viewpoints. As in the inaugural session, you have already discussed, and the topic, two things. The one thing which I am talking about, that when we are talking about that it is given in the fundamental rights under the part 3, and when we are talking about it is given under the part 4 of the us to shift from part 4 to part 3. That's a big question, because nowhere it is mentioned that you cannot shift, and we have shifted that right to education. The right to education, that was a part of the, again, the direct principal policy, that duty was there, that the states will take care of it. But we find that states, maybe to some extent we find that it is not performing properly. That may be the reason that we shifted from part 3, part article 21A, you all know. And the result was that, that now it's a part of the fundamental rights. And under the fundamental rights, what the right has been granted, it is granted under the Article 32 or under Article 226, that you can redress it through the court. This is the rights which are. But even we have experience in our country that besides this, there are some people who cannot afford that. The judicial system which are prevailing in our country, it's very costly, or sometimes we don't have any kind of the knowledge about it. And then the very important things which have been done by our judiciary, which you are calling it the judicial activism, might be that we have introduced the PIL, public interest litigation. So how beautifully that means the step initiative has been taken by our constitution, or you can say the judiciary. But besides that, we find that as far as the health is always neglected, and we don't have, as we have seen, if you go through the text, then you'll find specifically it is not mentioned under the Article 21. Article 21 is talking about that right to life and personal liberty. But the judicial interpretation that we have understood, or the judiciary established it, that right to life includes right to health. Now the question is that if suppose tomorrow, as the chief guest of the inaugural session, Professor Bhushan Chandra ma'am, has already that we had prepared many, you can say the policies regarding the health, right to health. My question is that suppose tomorrow we will get an act, so what is the use of that act? If again it will see that the society will remain in that with their own attitude that no, we are not going to live, as the Dr. Aman has already stated that if we don't want to change ourselves, then it is not possible. We have I'm citing one act, the Dowry Prohibition Act we have. So what is the use of that act? What is the use of that act? How? We have a very strong act, the Dowry Prohibition Act. Who are taking dowry, or who are giving the dowry? We don't find the person, those who are illiterate, unless and until we adopt ourselves. That act is meant for whom? It is for us. And if we will see, if we will say that the implementing agency is not implementing it, then we are always indicating towards the government, but the three finger indicating towards us. So who is more liable? The government is not more liable. We people are more liable. So, of course, that it's a requirement for the judiciary. The judiciary, if there is no specific law, the judiciary will not interpret. And that the international instruments which you have, that when we read the international law, then at the time you will find that unless and until it is a part of your domestic law, the judiciary is not bound to follow. They do not know your rights. So, paternity of the law, it is our duty that we will have to create awareness, and at the same time that I wish I'm really thankful to all of you for hearing me message. Thank you very much. थैंक यू सर. सर ने भी हम सबको राइट टू हेल्थ को रिलेट किया है पार्ट 3 एंड
पार्ट 4 से रिलेट करके जिस प्रकार से फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बताया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो इम्प्लीमेंट की बात है, हम यहाँ पर प्रयास करते हैं कि कोई लीगल प्रोविजंस नहीं है या कोई एक्ट नहीं है। जिस प्रकार से सर ने डाउरी प्रोविजंस का एक एग्जांपल दिया है, उसमें एक्ट तो बन जाता है, उसका इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है, बट कहीं ना कहीं जो अवेयरनेस की कमी है वो हमारी आपकी है। इसलिए जो सोसाइटल हम लोग हैं, तो समाज में हम आपको ही मिल करके जो ये प्रॉब्लम्स हैं उसमें कहीं ना कहीं अवेयर होना पड़ेगा और अन्य लोगों को भी हमको जागरूक करना पड़ेगा। थैंक यू सर। सर कंटिन्यू सर। Respected chair of this technical session, Professor B.D. Singh, other distinguished persons on the dais, dear students, faculty members. Since morning we have been listening right to health, importance of this right to health. The speakers have already emphasized we need to have a specific legislation. Constitutional aspects have already been discussed. I am going to put forth a different perspective. Whenever we are to secure this right to health, a very important aspect that we need to focus: access to medicine. Whenever we say access to medicine, it has to do with so many other factors existing in our society, including poverty. Because when medicines are not affordable, they are beyond your reach, how will you secure this very important right? And many times we find intellectual property right an emerging right, and in this economic world, it has got much significance, much importance in today's world. Though we have taken many initiatives at international level, at domestic level, particularly after WTO. When WTO came into being in 1995, being signatory to that WTO, we also amended our laws in the field of intellectual property rights. We have incorporated so many provisions that to secure this access to medicine in particular. It's all about quid pro quo, something for something. Creators, innovators, they contribute some valuable information, some valuable knowledge. In return, state sovereign grants exclusivity. But that exclusivity somehow leads to monopoly. And monopoly has not been considered good to any economy, any market. Because we believe in competition. And because of competition, we get a lot of advantages. There are so many advantages that they receive. That's why it's all about quid pro quo. But many times, whenever you are to earn this valuable right, a property, intellectual property, definitely it can be earned with healthy brain. So first of all, you are to secure that right to health
And once you secure that right to health, you can find more and more creators, more and more innovators, and they would be contributing more to the betterment of the society, betterment of the nation. So things are well connected, interlinked. But at the same time, considering so many diseases, and particularly if I refer cancer, HIV, the medicines are very expensive. And they are beyond the reach of the poor people. That's why you might have heard about certain international declarations, certain international conventions dealing with all such issues. Though we have limited time, but I would like to refer specifically the Doha Ministerial Conference under the aegis of WTO. That was only to secure this access to medicine. And we all have seen the impact of that one international consensus. But that was possible only by curtailing this valuable intellectual property right. If we are not to limit, if we are not to curtail that intellectual property right, because that gives you monopoly, this access to medicine cannot be secured. If I give you one example, a very good example, you must be knowing about polio vaccine, a very important vaccine. And during pandemic, we all have understood the importance of a vaccine. Earlier, we used to consider that vaccines are only meant for children. But now we all have realized vaccine and booster dose of vaccine, the importance. When a question was asked to Jonas Salk, who invented this polio vaccine, that who owns patent of this vaccine? And this question was asked in a TV show long back, 1955. Edward Murrow, he was the anchor, and he asked this very simple question. You have invented very good vaccine, still we administer 2 boons zindagi ke every Sunday. And government spends a lot of money. So it shows the value of this invention. When this question was asked, who owns patent? Do you know what he answered? He answered, well, I would say, people of the world. Because he never claimed patent on that valuable vaccine. He could have earned thousands of crores minimum. If you see the volume of the use, every children below the age of 5 years, every Sunday, 2 boons zindagi ke. But he never claimed the patent. Why? Because he was of the view that I have invented this vaccine for saving humankind. So these kind of people are also there. They are ready to forego, they are ready to surrender, waive off their valuable right, valuable economic right to save humankind. That's why whenever we talk about any monopolistic right, we need to make a balance between a private interest and public interest. Because right to health definitely a very integral part of this public health scheme, the directive principles. And we have to secure it anyhow. Unless until we make that balance, this cannot be secured. So we have different kind of provisions like compulsory licensing, where state can intervene with someone's exclusive right. And definitely health is the most important area for which this intervention can be made by the state. Even for any foreign jurisdiction, if anyone having this valuable right, and here we have to get some advantage of that invention. So without asking that owner of this valuable economic right, that is intellectual property right,
the state can intervene in the form of certain provisions are there, polar exception, parallel deportation, so many measures have been adopted by your lawmakers, definitely under the aegis of TRIPS and WTO. So my concern here is only that whenever we talk about right to health, we need to discuss, we need to focus some other ancillary issues as well. Then only we can have the holistic protection, the holistic, we can secure this right to health. So with these notes, I am concluding, and thank you very much for your present hearing. Thanks a lot, organizers, for giving me this opportunity. Thank you. थैंक यू सलमान सर, आपने जिस प्रकार से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के विषय में हम सबको जानकारी दी है और खासकर एक नई जानकारी हम सभी को मिलने की आई है कि जो मेडिसिन्स जो हमारे यहाँ पर बेसिक नीड्स हैं, हमारे यहाँ पर जो पुअर पीपल है वो उन मेडिसिन्स को यूज नहीं कर पाते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के द्वारा पेटेंट का जो राइट दिया गया है, कहीं ना कहीं जो मोनोपोली राइट है उसके माध्यम से एक जो है ना कहीं ना कहीं राइट टू हेल्थ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही है। सर आपने बहुत अच्छे से हमको जो बताया है, हम सभी को जो प्राइवेट इंटरेस्ट एंड पब्लिक इंटरेस्ट की जो भी बात बताई है और किस प्रकार से इम्पैक्ट पड़ता जो आपने बताया इंटरनेशनल कन्वेंशन, दोहा कन्वेंशंस एंड अदर्स जो है कन्वेंशंस जो हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लास्ट में ये है कि हम सबको कहीं ना कहीं अवेयर होना पड़ेगा। थैंक यू सर। सर आगे की प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए सर मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि वो हम सबको अपने वैल्यूएबल नॉलेज के द्वारा पूर्ण रूप से जो है जो भी हमको अभी भी जानकारियां नहीं प्राप्त हुई हैं वो हमको जानकारी दें। थैंक यू। हमारे सहयोगी डॉक्टर मनदीप जी, डॉक्टर माली जी, डॉक्टर सहवाल जी, शिक्षक साथी और छात्र छात्राएं, यहाँ पर अपने अपने एरिया के कई विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें right to health in India, constitutional safeguards, right to health in environment pollution, role of intellectual property rights on necessary medicines, right to health child, right to health senior citizens, right to health in India, right to food for good health, different एरिया यहाँ पर रखे। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हम केवल राइट्स की बात करते हैं, हमें ड्यूटी याद नहीं रहता है। हम एक टॉफी खाते हैं, रैपर हवा उड़ा देते हैं, हम पान खाते हैं, कार का दरवाजा खोलते हैं, पूरा रोड गंदा कर देते हैं, हम घर से पूरा निकालते हैं, बाहर फेंक देते हैं, दूसरे के दरवाजे पर खिसका देते हैं, वो देख तो नहीं रहा है, बस खिसकाया बाहर आ गया, हम घर अंदर आ गए। अगर जैसा डॉक्टर अमनदीप जी ने कहा कि हम इन्वायरमेंट के साथ क्यों नहीं सकते, हम अपने ट्रेडिशन के साथ क्यों नहीं सकते, हम क्यों राइट्स की मांग करते हैं? अगर हम अपने ट्रेडिशन को ही फॉलो करें तो हमारे हेल्थ आज भी अच्छे होंगे। हम मॉडर्नाइजेशन में जाकर के दिखावा ज्यादा कर रहे हैं। हम लोग बचपन में कॉटन के कपड़े थे, रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन आज फिर वही सिचुएशन आ गई कि कॉटन के कपड़े आज बड़े अच्छे हैं, रिकॉर्ड कपड़े अच्छे नहीं। तो उस समय ढीले कपड़े बड़े अच्छे थे, बीच में टाइट कपड़े बड़े अच्छे हुए, फिर आज देखिए ढीले कपड़े अच्छे। तो हम घूम फिर करके अपने ट्रेडिशन पर तो आ रहे हैं, हम अपनी ड्यूटीज क्यों नहीं निभाते हैं?
हम अपने बच्चों को सिखाएं, हम अपना खुद प्रयास करें, हम खुद इस तरह के कार्य करें। हमारे यहाँ कभी, अगर आप अभी भी आप घर में बात करिए, कभी पानी में थूकने से मना किया गया, कभी पानी में कूड़ा डालने से मना किया गया, तालाब में कूड़ा करकट नहीं डालना है, नदी में नहीं जाना है, नदी पेशाब नहीं करना है, बाथरूम नहीं जाना है। ये हमारा ट्रेडिशन था। हमने क्या किया, धीरे धीरे स्मार्टाइजेशन में अपोजिट वर्क करना शुरू कर दिया। जंतु थे उनके लिए वो भी सर्वाइव करें और नदी भी साफ रहे। आज क्या है, हम सीधे केमिकल डाल रहे हैं। कहां से हमें अच्छा पानी मिलेगा? हमारी तो जुटी ही गायब हो गई। हम मांग रहे हैं कि हमको शुद्ध पानी मिले। पानी हम अपने ही गांव के तालाब को, सारे सीवर का पानी तालाब में जा रहा है। फिर हम कैसे कहते हैं कि हमें अच्छा पानी मिले? हम लोग अपने बचपन में तालाब का पानी पिए हैं। हम लोग मैदान में खेलते थे, बगल में तालाब था, ये हुआ कि घर जाएंगे तो घर में लोग पकड़ लेंगे, यही पानी रहा। तालाब जो है सीवर का टैंक बन गया, नदी हमारे नाले के रूप में कन्वर्ट हो गए। तो हम अपने ट्रेडिशन से ही भाग रहे हैं। हम लोग इन्वायरमेंट का, बल्कि इन्वायरमेंट साइंस पढ़ा रहे थे, बड़ा अच्छा आपको बताया, तो हम लोग टीचर ने बताया था क्यों शंकर जी के पिंडी पर पानी गिराते हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि परमाणु भट्टी अपने यहाँ जो बनती है इंटरनेशनल लेवल पर, अगर आप लोगों को जानकारी हो तो उस पर पानी गिराया जाता है। पानी हमेशा गिरता रहता है। हमारा ट्रेडिशन था कि ठंडा रखना है। परमाणु भट्टी उसी कॉन्सेप्ट पर है, उस पर लगातार पानी गिराया जाता है। हमारे यहाँ भोजन में अगर आप देखे होंगे, एक परंपरा थी कि पीढ़ा पर बैठ कर खाना खाना, अगर आप जानते हो। और पीढ़ा पर बैठने का तरीका क्या था? नाखून जमीन पर टच करता था, नाखून जमीन पर टच करता था, हम ऐसे बैठते थे। क्यों? कि जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे दांत के टकराने से पैदा होती थी, अर्थ वो हमारा ट्रेडिशन था। हमारे यहाँ पैर छूने की परंपरा थी, घुटना छूने की परंपरा नहीं। पैर क्यों छूते थे? नाखून छूते थे। बहुत से अगर आप देखेंगे तो बड़े बुजुर्ग होते थे, विद्वान होते थे, उनके पैर को धोया जाता था। पैर धो करके उसको चरणामृत के रूप में लोग देते थे। क्यों? क्योंकि जो रेज निकलता है उस रेज को हम देते थे, वो संस्कार को हम देते थे। उसे कई चीजें आपको डाइल्यूट हो जाती है। एक तो हम उनसे उस संस्कार को देते थे जो कि बाई टच हमारे अंदर रेज के रूप में जाता था। हमारी जो विश्वास इन सब के लिए हमें बहुत से ऐसे मैटर हैं जो हम आपसे डिस्कस करते रहे तो बहुत लंबा हो जाएगा। जितने भी आप प्लांट्स देखते हैं सारे हमारे हेल्थ से जुड़े हैं। हम क्यों ऐसे छोड़ते चले जा रहे हैं? आप बच्चों से बात करिए, पीपल, एक पीपल 500 मीटर तक के रेंज को साफ करता है। पीपल का कोई प्लांट नहीं दिखता। तो अगर हम उसे धार्मिक रूप से नहीं मानते तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हम उसे एक्सेप्ट करें। तुलसी का पेड़ अकेला एक ऐसा पौधा है जिसमें पारा पाया जाता है। इसीलिए कहा था कि तुलसी की पत्ती को केवल 4-5 पत्ती ही यूज करना चाहिए। ज्यादा यूज करेंगे तो नुकसान करेंगे, नहीं यूज करेंगे तो ये सब हमारा जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, नीम है, हल्दी है, बहुत सारे ऐसे प्लांट, कोई भी प्लांट आते हैं, अशोक है, सारे आयुर्वेद से जुड़े हुए। हम बार बार राइट्स की बात करते हैं, हमें राइट्स मिल जाए, हमें मिल जाए, गवर्नमेंट सब कुछ दे दे। रूल रेगुलेशन बनाने से या गवर्नमेंट पर आश्रित होने से हमें राइट्स नहीं मिलता। राइट्स को हमें ड्यूटी के साथ जो करके चलना है कि हमें भी कुछ करना है। आप रैपर खोलिए, जेब में रखिए, जहाँ पूरा डालना वहाँ डालिए, कुछ खाइए, प्रॉपर प्लेस पर। जो हमारे ट्रेडिशन थे आज भी अगर आप बनाए रखते हैं, आपका घर सुरक्षित होगा, आपका गांव, आपका मोहल्ला, आपका शहर, आपका देश सुरक्षित होगा। थैंक यू।
थैंक यू सर। अंततः मैं लास्ट में आभार व्यक्त करता हूं मैं हृदय से महाविद्यालय परिवार की ओर से, विधि विभाग की ओर से, अपने जो पैनल में आए हुए सभी सम्मानित जो है हमारे विद्वज्जनों का मैं हार्दिक जो है आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस व्यस्त समय में होने के बावजूद भी इस संडे के दिन हमारे महाविद्यालय में आकर के और इतना जो समय दिया और अपने व्यूज यहाँ पर रखे हैं, इसके लिए हम लोग हृदय से उनका आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू बीडी सिंह सर, थैंक यू राजू माझी सर, थैंक यू मनदीप सर, थैंक यू सहवाल सर, आप सबका बहुत बहुत आभार। थैंक यू।